लिए पहले हंस लिए। आराम से हंस लिए पहले। मैं जानता हूँ गाड़ी आ चुकी है, जानता हूँ। Why did I do it? That's a good thing. That's because where I wanted to be in fitness wasn't really being reflected with my effort. And I think the beard gives your jaw sort of a shape. And once that shape is achieved, you stop trying very hard for it. You stop looking yourself in the mirror and thinking, man, you know what, I probably can lose some more fat. And this is not body dysmorphia talking to you. Where I want to be is a far way from where I am currently. Have I gotten far? Yes, I have. But have I progressed a lot in the last 1 year? Nah. You can actually see that on my face. It's not that different from where I was 1 year ago exactly today. तो इसी वजह से I decided, you know what? I'm gonna go clean shaven. Because then people are gonna be like, man, you look so weird without a beard. Weird without a beard. And the reason is कि I cannot make a jawline appear यहाँ पे simply by a beard. I really have to put in the work of losing that kind of fat. Now I know some of you may have watched a lot of black pill videos and you're like, you know what, Abdullah, if you do not have the right bone structure, ये वो फलाना ढिमाका jaw structure ठीक होना चाहिए in order for you to work. Yeah, screw you. Shut up. ठीक है? It doesn't work like that. What works is that you put in the work and you don't really understand कि आपका jaw किस तरीके से हो सकता है और यार आपकी फेस का स्ट्रक्चर किस तरीके से हो सकता है until and unless you're down to like 15% body fat. And वहाँ तक पहुँचना is a long time. It's a long game. And so that's why I'm going to be focusing towards that. Fitness में मैं किसी दिन बहुत detailed video बनाऊंगा because I know there are a lot of people who want to transform themselves, but पहले मैं खुद वहाँ तक पहुँच जाऊँ तो शायद मेरा कहना थोड़ा ज़्यादा मायने रखेगा. I can tell you a little bit about fat loss, लेकिन मैं भी तो काफ़ी हद तक फैट लॉस करने के बाद एक स्किनी फैट कंडीशन में खुद अटक गया हूँ. सो लेट मी गेट टू दैट गोल. इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप 1 2 3 में आप 1 से 3 तक जाना चाहते हो, मैं 2 पे अटका हूँ. लाइक आई एम स्टक हियर. तो जिस दिन मैं 3 तक थोड़ा सा पहुँच जाऊँगा या पहुँचने वाला हूँ उस दिन आई विल प्रॉब्ली मेक अ वीडियो अबाउट दिस एंटायर जर्नी. सो दैट्स दैट. और क्या अपडेट है? अपडेट ये कि आज मुझे काउंसलिंग पढ़ना शुरू कर देनी चाहिए थी. क्या मैंने पढ़ना शुरू करी है? नहीं. देर इज़ नो एक्सक्यूज फॉर दिस. आई नो. एंड अकाउंटेबिलिटी की जहाँ तक बात करें तो मैंने अकाउंटेबिलिटी पैटर्न दिया ही नहीं उमेर को या फिर नौखेस को, जो वो मुझसे पूछ पाते कि हे डिड यू डू द वर्क. बिकॉज मैं उठा ही आज लेट, आज भी मैं लेट उठा, लेकिन आई स्टिल वेंट टू द जिम. सो दैट्स अ विन फॉर मी कि आई एम स्टिल मैनेज टू गो टू द जिम. सो दैट्स वन थिंग दैट आई एम प्राउड ऑफ. अदर देन दैट, या how's the eyebrow slit looking though? By the way, my barber said it would be a nice idea, so I was like, okay, fine, go ahead, do it. It's not hurting anyone. So there is that angle to it. What am I doing apart from that? The job's going pretty well. I have actually applied for a raise. I'm not sure if they're gonna give me a raise though, despite the amount of work that I put in. And it's not like, I understand where they're coming from. It's a bear market, financial economy की बैंड बच चुकी है. So they may not award me with a raise, लेकिन आज मुझे बात करनी है with one HR person at Polygon. So I hope things work out and I hope आगे का काम थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ी सी ज़्यादा enlightening हो. So basically whatever they tell me right now would help me understand my future at the company. It's not कि Polygon is the only Web3 company जो काम करती है. It's just that I want to work in Web3 because I truly understand that the technology is revolutionary. Anybody who understands blockchain technology knows कि वो finance के सिवा भी बहुत सारी चीज़ों में use हो सकती है. Science is one of them. Decentralized science is a good avenue going forward as well. Perhaps it's not the right time for it right now क्योंकि वो bear market के अंदर बहुत ही ज़्यादा सिर्फ core financial products या फिर core SaaS products ही काम कर पाते हैं. इतना ज़्यादा हम लोग इनोवेशन की तरफ चेज़ नहीं कर रहे होते इन द बेयर मार्केट. बट कहीं ना कहीं वी कैन हैव अ स्मॉल अप ट्रेंड एज वेल, कंसिडरिंग दैट जिम क्रेमर ने कहा है कि इट्स द बेस्ट टाइम टू सेल ऑल योर क्रिप्टो. फॉर दोज ऑफ यू डोंट अंडरस्टैंड, जिम क्रेमर इज अ पर्सनैलिटी जो भी फाइनेंशियल प्रेडिक्शन करता है उसका हमेशा अगेंस्ट हो जाता है, हमेशा उसको उल्टा हो जाता है. तो उसने कहा कि नाउ इज द टाइम टू सेल ऑल योर क्रिप्टो. एवरीबडी जस्ट वेंट सुपर हैप्पी विद लाइक यस नाउ इट्स गोना गो अप. But again, this is not financial advice. Don't take my word for it. Don't put your millions and life savings into crypto just because you heard me say it. Don't do that shit. Even I don't invest, to be very honest. I'm going to be very frank with you. I don't have money invested into crypto. I don't actively trade. I don't actively invest. सिर्फ इस वजह से because I earn through those industries क्योंकि मैं वहाँ पे अपना काम करता हूँ. So I kind of rent out my hours
एंड वहाँ से फिर मैं वैल्यू डिराइव करता हूँ. आई डोंट एग्जैक्टली बिलीव इन गेटिंग इनटू फाइनेंशियल ट्रेडिंग टिल यू अंडरस्टैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स या माइक्रो इकोनॉमिक्स अच्छी तरीके से थोड़ी सी, एंड टिल यू अंडरस्टैंड साइकिल्स एंड हाउ ट्रेड्स वर्क. आई थिंक देयर इज अ लॉट इन देयर जो कि मैंने अभी तक नहीं सीखा है, एंड दैट्स व्हाई आई ट्राई माई बेस्ट to stay away from situations like these. So this is the update there. I have a client call coming up. This is for the other company that I have. तो वो around 2 या 3 बजे के आसपास होगी. The other company I'm not talked about it much, but hopefully one day I will. It's more of something that we are keeping under the covers because अभी भी उसकी pilot testing चल रही है, and we have to see if that's a viable revenue generation model. Linity को, you heard it here first. We're actually going to slow it down. When I say slow it down, I mean really, really slow it down. It doesn't mean कि we are closing it, but yeah, we are not actively working on it anymore. क्यों? If you want to know the reason, just drop it in the comments अगर आपको जानना है, because I don't think like a lot of you might even be wondering about, hey, what is he doing? Why is he closing down the company? I'm not closing down the company. I'm just putting it on a back burner because I realized a few things sooner than later, which I had to realize. And business में मैं मानता हूँ कि you have to be a little bit emotionally agnostic, in the sense that you cannot attach your emotions to the business that you have. If you do that, then that's a surefire way of getting screwed over in the long term. Most people would get emotionally attached to their business and would keep working in it, and even if it's not paying off dividends, yeah, even if it's not promising a future trajectory, and that's something that we had to understand as well. So that is why I didn't take the advice of most people. So इसी वजह से that is important to understand, and I will tell you about it if you guys are interested. If you guys are not interested, I don't want to spend time talking about my decision making process यहाँ पे. It's not that great, of course. I mean, if my decision was right and 5 years down the line I'm a millionaire, then of course I'm a genius. But if that doesn't happen, then I probably just made a wrong decision. And फिर यहाँ पे मैं अपना decision making explain कर रहा हूँ यहाँ पे, तो it would be just gloating. बहुत ही embarrassing होगा मेरे लिए आगे जाके पीछे look back करना. Although there is nothing to be embarrassed about in terms of failure. Everybody fails, man. 22 मैं कहता हूँ 30 is the age जहाँ पे left and right आप fail कर सकते हैं. And you would still not be considered quote unquote a life failure by any mark. So 20 to 30, please don't play it safe. Play it very, very vicariously. Play it very, very wildly. लोग कहते हैं अर्ली ईयर्स में ही वेल्थ बनती है, ये बनता है, वो बनता है, लेकिन एट द सेम टाइम यू नीड टू रियलाइज कि अर्ली ईयर्स में यू आर गेनिंग द मोस्ट एक्सपीरियंस, एंड दैट इज हाउ यू आर जनरेटिंग वेल्थ लेटर डाउन द लाइन. इट्स नॉट दैट 20 ईयर्स के ऊपर 20 ईयर्स to 30 ईयर्स की एज में यू आर कमिंग अप विद द बिजनेस दैट टेक्स ऑफ. उसके चांसेस एक्चुअली काफ़ी कम होते हैं. ओनली अ फ्यू पीपल एक्चुअली मेक दैट हैपन. सो don't try to pressurize yourself into wealth. That will never happen. Try to gain as much experience as possible and then put that experience into application. If you do not apply the experience that you have learned, then you might as well have not tried at all. So I think this is a good way of going about it. Start a business. A business doesn't have to be a legal entity, क्योंकि लीगल कंप्लाइंस वगैरह ये सब काफ़ी आगे जाके आता है अगर आप खासतौर से हेल्थ के साथ डील कर, जैसे लिलिटी हेल्थ के साथ डील कर रही थी. लेकिन फॉर मोस्ट केसेस इट कैन बी समथिंग वेरी वेरी सिंपल, राइट. इट कैन बी समथिंग सो सिंपल एज मान लो खाना बेचना, अपने घर का खाना बना के बेचना. सो दैट डजंट रिक्वायर you to have a very good compliance structure or legal structure in place. I'm not asking you to do something that is illegal. I'm just saying कि small business owners इस चीज़ कर सकते हैं. They can realize whether or not they have a knack for business. And the best thing is about these small businesses is that you can pivot very quickly. You can क्योंकि decision making सिर्फ तुम्हारे हाथ में या छोटे मोटे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके हाथ में, कोई बहुत बड़ा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपनी तो है नहीं कि हर एक डिसीजन डिलिब्रेट करा जा रहा है एक महीने तक और फिर जाके वो पॉलिसी इनैक्ट करी जा रही है, कम्युनिकेट करी जा रही है, कम्युनिटी को कम्युनिकेट करी जा रही है, वर्कफोर्स को कम्युनिकेट करी जा रही है. वो सब तो हो नहीं रहा है. तो यू कैन बी वेरी वेरी फास्ट एज अ स्मॉल बिजनेस. एंड 20 से लेके 30 तक, दैट्स 10 years. Even if you spend 6 months on each business trying to make it work. And when I say spend 6 months, I mean really, really work at it every single day for like 2 से 3 घंटा. I'm saying 2 से 3 घंटा because I completely understand you have your classes and everything. 2 से 3 घंटा directed work on your business, and if you manage to land your client and उसके बाद if you can make it profitable means जितना आपने invest किया उससे ज़्यादा पैसा बना लिया आपने, then that business can go somewhere. Maybe it won't have like the highest earning potential, but आप एक बंदा hire कर सकते हो जो उस business को directly manage कर ले. So that's like 20 businesses under your belt, 20 potential businesses under your belt. And that's just me saying कि एक टाइम पे एक बिजनेस करो. So
go take the shot. Matlab, there are ways of starting a business with zero money. I too realized that after spending quite a lot in launching my first one. So think about that.